Hello children, I hope all of you are safe. Last time we have finished up to fish eye. You remember Meenakshi? Yes. The first question on this second page, that is Meenakshi. The second question will move to the second question. Fish can have very different sizes. The smallest fish is about 1 centimeter long. 1 centimeter, I will show you on scale. See, this is 1 centimeter. सिर्फ इतना. आपके नाखून की साइज के जितना, सिर्फ इतना. How long is the biggest fish you can imagine? Just imagine the biggest fish. Okay, I'll give you idea how you can write this answer. See, on page 2, the first question is draw a face with fish eyes, that is Meenakshi. The second question is the biggest fish I can imagine is blue whale, which is about 16 meter long. I am writing 16 meter long. You can write 11, 12, whatever. Your answer is whatever you see here. Clearly it is written that you have to imagine, so your imagination can be different from the others. So whatever you write will be the correct answer. How many times longer is your big fish than the smallest fish? See this question, how you'll write, I'll show you. Here it is. Answer number 3. Length of smallest fish is about 1 centimeter. 1 centimeter कहाँ से लिया हमने? यहाँ से. अंदर ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है. Length of biggest fish is about 16 meter. ये 16 मीटर मैंने कहाँ से लिया? यहाँ से. क्योंकि मैंने यहाँ 16 मीटर लिखा है, तो यहाँ पर भी मैं 16 मीटर लिखूँगा. अगर आपने 12, 13, 14 या जो भी आपका मेजरमेंट आपने लिखा है, तो आप वो यहाँ लिखेंगे. नाउ हमने थर्ड स्टैंडर्ड में ही मीटर टेप बना के सीख लिया था. दैट वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. सो 16 मीटर इक्वल्स टू 1600 सेंटीमीटर. Hence, the longest fish is 1600 times longer than the smallest fish. 1600 times. कैसा है? मैं बताता हूँ. आपको उसके लिए डिवीजन करना पड़ेगा. 1600 सेंटीमीटर आपकी लॉन्गेस्ट फिश डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट फिश कितनी थी? 1 सेंटीमीटर. सो 1600 ones are 1600. So the longest fish is 1600 times longer. Let's move further. The biggest fish is whale shark. It is actually not a whale, but is a big fish. Whales are different from fish. How they are different from fish? Let's see. Whales breathe like we do through their noses, but fish have no noses and they take in water, not air. Whales give birth to babies, but fish lay eggs. The whale shark fish looks big and dangerous, but is quite harmless. It does not attack humans. Whales are harmless. They do not attack humans. That is, go through the difference between whale and fish again. Here it is. What does whale do? Whale breathe like we do. हम जैसे सांस लेते हैं वैसे ही whales लेती है.
नाक से, whales breathe like we do through their noses. Fish का क्या होता है, they have no noses and they take water not air. We take air, oxygen, right? But they do not take air, they take water. Whales का क्या है, give birth to babies, gives birth to babies. whale बच्चों को जन्म देती है. फिश क्या करती है, ले एग्स. ओके, आगे देखते हैं. One whale shark was as long as 18 meter. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing on one on top of the other. And guess what it weighed? Well, much more than what 12 of you together weigh. Its weight was about 16,000 किलोग्राम. देखिए यहाँ पे जो वेल होती है वो बहुत ही लंबी होती है. इट इज़ 18 मीटर लॉन्ग. वन व्हेल शार्क इज 18 मीटर लॉन्ग एंड वो इतनी लंबी होती है कि आप एक के ऊपर एक अगर चढ़ते जाएंगे तो आपके जैसे टोटल 12 चिल्ड्रन लाइन में एक के ऊपर एक ऐसे वन ऑन द टॉप ऑफ अदर खड़े हो जाएंगे, उतनी लंबी. एंड इट वुड वेट 16,000 kilogram, much more than all 12 of you together. So on page number 3, about how many kilogram do you weigh? तो आपका जो भी वज़न है वो वहाँ पे आपको लिखना है. How you will write? You will write like this. I'll show you. I weigh about 30 kilogram, or you can write 30 kilogram. So 12 children like you put together will weigh about. I will write this answer. You write this answer. I will give you an idea. So the weight of 12 children like me together will be 12 into ये वजन मैंने 30 लिखा तो I will write 30, 360. आप क्या करेंगे, आप अपना वज़न लिखेंगे. सपोज़ आपका वज़न 30 नहीं है, आपका वज़न है 22. तो आप क्या करेंगे, तो अगर पीछे ज़ीरो नहीं तो आप ये मेथड नहीं कर पाएंगे. आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप हमेशा से करते वही करेंगे. 12 इंटू अगर आपका वेट 22 होता, 22 पहले लास्ट डिजिट से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. अब ये 2 नहीं है, ये तो 20 है. अगर ये टेंस प्लेस पे है तो हम क्या करेंगे, प्लस करके पहले से एक ज़ीरो रख देंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, दोनों का प्लस कर देंगे. 4 6 2. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 264 किलोग्राम्स. आगे देखते हैं. About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? अगर 12 चिल्ड्रन आपके जैसे एक साथ रखेंगे, जो हमारा ये यहाँ पर आंसर था वो वाला आंसर, तो वेल कितना ज़्यादा मीन्स यू हैव टू राइट डिफरेंस. सो वेट ऑफ व्हेल शार्क इज 16,000 किलोग्राम. कहाँ से लिया, टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी. यहाँ पर वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 360. सो डिफरेंस इन द वेट वुड बी 16,000 माइनस 360. यहाँ पे आपको जो भी आंसर था उसी को 16,000 में से माइनस करना है. यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 15,640 किलोग्राम. To see the difference between whales and fish, look carefully at their tails. Can you see that the fish tail stands flat along its body, but the tail of the whale almost look like 2 legs? Can you spot the fish in this picture? आपको क्या करना है, फिश को स्पॉट करना है. तो फिश का क्या होता है, वो पैरेलल में उसकी
टेल होती है, जबकि व्हेल की जो है वो ह्यूमंस के लेग्स के जैसा होता है, 2 लेग्स के जैसे अलग अलग. सो यू कैन स्पॉट इजीली. नाउ नेक्स्ट, स्कूल ऑफ फिश. Fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. In their school, they feel safe from bigger fish. Do you feel safe in your school? Of course you do. But अभी तो हम सब घर में सेफ हैं. Next page. To scare away the bigger fish, a small fish drink a lot of water, swell up and look big. आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना. तो फिश अपने आप को बड़ा दिखाएगी तभी वो सर्वाइव कर पाएगी. तो फॉर दैट सम फिश व्हाट दे डू टू स्केयर अवे द बिगर फिश. बड़ी मछली को डराने के लिए वो क्या करती है, दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. They drink up a lot of water, swell up and look big. Now next, Jinsi used these shapes to make drawing of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. आपको ऐसे कुछ शेप कलर पेपर से कट करने हैं और ऐसे ही कुछ सी एनिमल्स बनाने हैं. कुछ सी एनिमल्स के फोटोग्राफ्स आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, लाइक सी अर्चिन, lobster, eel, red snapper, clam, parrotfish, cuttlefish, octopus, jellyfish, squid, silver pomfret, crab. Which of these sea animals have you seen before? If you have visited aquarium, you might have seen each one of these or some of these. Fishermen in their boats. How many of you have seen the sea? Where did you see it? Did you see it in a movie or for real? How deep do you think the sea could be? Find out. Do you know how to swim? Would you be scared of high sea waves? Close your eyes and imagine the sea with waves rising high. How high do you think the waves can be? आपको बताना है, आपको सोचना है कि कितनी ऊंची हो सकती है सी वेव्स. 5 मीटर, 10 मीटर, any number that you have to write in this, fill in the blanks. So that you have to fill into this blank. Imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. अब सोचिए कि there are fishermen going up and down in their boat. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. If the sea is rough with the very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. See, a photo of log boat is given here. Log boat is made of wood. From here onwards, we will study from here. We will end our session. We will study later from here onwards. Thank you.